Biman. 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 Yeah. Do you know what Biman means? To fly or something like that. Biman means it's like a sort of aeroplane. Aeroplane, तो yeah. आप एक चलते हुए हवाई जहाज हो इस टाइम पे, ठीक है? तो विमान भाई आप कहाँ से हो? Sorry. आप कहाँ से हो? Where are you from? Oh, I'm from Sri Lanka. Which place in Sri Lanka? Colombo. Yeah. Colombo. So Colombo, how is it doing financially? We had some issue back in. Is it better? It's a bit rough. Yeah. Our politicians are super corrupt, and well, with all the pressures that happened in the world the last 2 years, things are in pretty bad shape. But I think that people are doing things, and the politicians are also trying, some of them. Yeah. So I think we're at the bottom, but we're sort of, figuring our way out to come out of that. Yeah. तो corrupt तो हमारे भी हैं, although we also have corrupt politicians. Oh, so yeah. we are I think it's equal there. Everywhere, It's everywhere. Yeah. So my question to you is, because India is very much connected to Sri Lanka by the time of Ramayana and the Ram Setu bridge or Ravan. What do you know about Ravan? To be honest, a lot of Sri Lankans would be upset with me for this because I don't really know much about the Ravana story, but it's pretty big in Sri Lanka. Because Ravana, I think he came with Sita to Sri Lanka, and so it's a big story in the cultural psyche. Ramayana. And Ravana, Hanuman, and all these characters. It's a big sort of part of the cultural history, the narrative of the history. Yeah. But do you? And for a while now, people have been looking for these helicopters that Ravana had back in the day, and so it's quite big. Yes. And coincidentally, your name is Viman. Yeah. So who put that name? Actually, my name is it's astrological. Not Sri Lankans. No Sri Lankans have that name. I haven't met anyone, and they did an astrological calculation at my birth, and they said my name's Biman, and then someone tried to introduce me to this group that's looking for Hanuman's reincarnation. So sometimes I wonder, but there you go, dropped it. So that's the story. Okay, Biman, it was nice talking to you. Oh, the Ram Setu. The Ram Setu, tell me. Oh, it's controversial at the moment. It's controversial because, there's this supposed bridge that was there, thousands of years ago, and there's a bit of land that's very shallow between India and Sri Lanka, and there's land and there's a bridge apparently that was there, but this Ravana story, this historical narrative, they say that they crossed using this bridge. Yes. So both in India, for the Hindus and the cultural narratives in India and Sri Lanka, it's a big thing. Yes. And recently I've heard in the Sri Lankan politicians and then the Indian politicians, and it's starting to get passed, I think, or it's starting to come up in sort of Congress and the South Indian Parliament or whatever, to build a shipping lane through this. Yes. So it's not really very well received. Yep. Both from a cultural perspective, I think a lot of Hindus and people don't want it because normally the shipping route is going around Sri Lanka and coming to South India. And then economically it's also pretty rough because Sri Lanka is already in a bad shape, and if you put that shipping lane, you're going to destroy that industry in the country as well. Yes. So I hope something favorable comes out of it that is both sensitive to the needs of the smaller countries in the region, but also the cultural values and the religious values of the people of the region, which must be respected. Yes. Yeah. So I also hope that we can save that bridge. And how long you been in Australia? I've been in and out. I've been a few years in Australia, but I recently came back for a show. Okay. About the ethnic conflict in Sri Lanka that was there between the Sinhalese and Tamils. Yes. So I came and acted in a show in Sydney, a theatre production which went really well, that talks about what took place and how end of the day it was human beings caught in the middle of this and lost their lives and had a lot of trauma happened, and to reveal that human story and shed light on that let's all live in peace and harmony, but let's hold those who should be held accountable for it. Okay, Viman, thank you for talking to me, and I also wish that we get, that we can save that bridge and we know more about
सो नाउ आई रिक्वेस्ट यू आर विमान, सो आई वांट यू टू कि अब आप उड़ जाओ यहाँ से. आई वांट यू टू फ्लाई नाउ. यू आर विमान, उड़ जाओ. उड़ जाओ. थैंक यू, नाइस मीटिंग ब्रो. आपका नाम क्या है? मेनका दवे. मेनका दवे. मेनका धवन दवे. दवे. अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत खुश है यहाँ पे. अच्छा. छोटा इंडिया लगता है, मतलब छोटा इन द सेंस कि वहाँ से आते हैं तो यहाँ पे लगता है कि अपनापन सा है, लोग अच्छे हैं, औजी लोग अच्छे हैं. हमारे लोग तो हैं ही जो हैं वो, और हम अपना जो भी अपना ओरिजिनलिटी है वो संभाल के रखे हुए हैं. तो उससे बड़ी और क्या चीज़ है. हाँ जी जी. वो कैसे संभाल के रखी है आपने? आपने देखा बिंदी लगाती हूँ मैं एवरी वीकेंड मोस्टली ट्राई करती हूँ साड़ी पहनने की. साड़ी पहन के ऑफिस जाती हूँ. अच्छा. तो मतलब दिवाली पे ऐसे नहीं, बट दिवाली पे है या कोई भी त्यौहार पे मैं अपने ऑफिस में आराम से बोल सकती हूँ. मुझे बोलने की छूट है, कुछ भी बोल सकती हूँ. अपने धर्म के बारे में है. मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ. अच्छा. माता जी पहनती हूँ. कोई भी ड्रेस पहना हो मैं अपने ऑफिस वेयर में पहनती हूँ. नो वन स्टॉप्स मी. तो रुद्राक्ष से आपको लगा कि भाई आपको कुछ फायदा हुआ? फ़ायदा क्यों, हमारा हम मानते ही हैं रुद्राक्ष. हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं. पवित्र फल मानते हैं. हाँ तो जी. फ़ायदा तो मुझे लगता ही है. नहीं, जो लोग इस बारे में बोलते हैं कि कुछ नहीं होता, जैसे मैं तो मानता हूँ इन चीज़ों में, तो जो लोग सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हाँ हैं. जी. मैं मानती हूँ, मैं हाँ जी. रेकी में मानती हूँ, रुद्राक्ष में मानती हाँ जी. हूँ, भगवान जो है सब में मानती हूँ. हाँ. देवी देवता में आप- मुझे फ़र्क पड़ता है. आपको कहाँ से मिला है रुद्राक्ष? इंडिया से लाए? हाँ, मैं इंडिया से. इंडिया में कहाँ से? मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है. अच्छा, तो अगर यहाँ पे मुझे चाहिए हो तो मेरे को कैसे मिलेगा? पता नहीं, मुझे आपको ढूंढना पड़ेगा. लेकिन ब्रिस्बेन मैंने किया, ब्रिस्बेन में यहाँ पे ये फ्रूट मिलता है. जो फ्रूट है रुद्राक्ष, हाँ जी. वो ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन में मिलता है. सो काफ़ी चीज़ें हैं जो ब्रिस्बेन में. हमारे आम भी काफ़ी उगते हैं जो इंडिया की याद आती है. हाँ जी. और दूसरी चीज़ रुद्राक्ष है जो वहाँ मिलता है ब्रिस्बेन. और इंडिया में भी होता है ये फ्रूट रुद्राक्ष वाला? क्या नाम है इस फ्रूट का? इसका नाम ही रुद्राक्ष है. जो fruit, रुद्राक्ष? हिमालय में होते हैं. हाँ जी. इसके 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 और 5, पाँचों मैंने पहने हुए हैं. अच्छा. इसके मुख होते हैं हिसाब से. तो हाँ, इंडिया में ही मिलते हैं. तो एक फ्रूट है जिसका नाम ही रुद्राक्ष और शिव भगवान से जो हाँ, रिलेटेड है. हाँ जी. थैंक यू मैम बात करने के नो लिए. वरीज. Thank you. थैंक आपका नाम? मेरा नाम इमोना रॉय है. सर इधर तो देखो, आप तो बिल्कुल इधर. इनको हिंदी समझ में नहीं आता. But he got what I'm saying. हाँ. Where are you from? I'm from Hong Kong. And what's your name? Vinod. Okay. And Imona, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? वेरी न्यू. अच्छा. बहुत कम टाइम, अच्छा. सवा महीना. अच्छा, तो इमोना का मतलब क्या है? इमोना, इमोन इज अ राग. राग, म्यूजिक, तो संगीत. संगीत. और सर के नाम का क्या मतलब है? विनोज. विनोज इज अ वेरी. Yeah, it's a very odd name actually. I've heard Vinod, but Yeah. what does J. Vinod means? I'm still trying to find out the meaning. Yeah. I'm figuring it out. Vinod. means smile. No, not Vinod, Vinoj. Vinod. The J. विद अ जे. J. Yeah. Never heard before. तो मैम आपको पहले आपको यहाँ पे अभी आप कह रहे हो ब्रांड नहीं हो, तो उससे पहले हांगकांग में थे आप? हाँ जी. कितना 10 साल. टाइम? 10 साल 10 हांगकांग साल में में. ताकि अभी यहाँ आई हूँ. बच्चों का एडमिशन हो गया यहाँ पे एक बहुत अच्छे अच्छा, स्कूल अच्छा, में. तो उस बच्चों के वजह से यहाँ हाँ आके जी. सेटल होना पड़ा. और कितना फ़र्क है हांगकांग में यहाँ पे? मैं तो कभी हांगकांग गया नहीं. दोनों ही डिफरेंट सिटीज़ हैं एंड बोथ आर फर्स्ट हाँ वर्ल्ड. जी. सो सिमिलैरिटी बहुत है. हाँ जी. बट ऑब्वियसली दिस इज वेरी बिग एज हाँ, कम्पेयर टू हांगकांग. हांगकांग. हांगकांग छोटा है, आइलैंड है हाँ जी. एंड सराउंडेड बाय आइलैंड्स. हाँ जी. दिस इज आल्सो सराउंडेड बाय वाटर. सो Water. सिमिलैरिटी बहुत है. यस. बट हाँ, लोगों में थोड़ी तो अंतर है. और वहाँ पे 10 साल, यहाँ पे अब आपका मन लग गया एकदम से? अभी तो मन तो लगाना पड़ेगा. मतलब अभी लगा नहीं है? नहीं, लगाना पड़ेगा. टाइम लगेगा थोड़ा. टाइम ज़रूर लगेगा. बट हाँ, यहाँ लोग अच्छे हाँ हैं. जी. सोसाइटी अच्छी है. लोग काफ़ी हेल्पफुल हाँ हैं. जी. सो अच्छा लग रहा है. So और far. खाना वगैरह ट्राई किया आपने यहाँ पे बाहर? घर का खाना. हम देसी लोग कहीं भी जाएं, हाँ जी. किचन हमेशा देसी हो. हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. सो सारा खाना हमारा किचन में ही बनता है. हाँ बस जी. कभी कभार फॉर कभी-कभार. जस्ट फॉर कहते हैं जस्ट टू फ्रीक आउट और टू हाँ कम जी. आउट एंड हैव हाँ सम जी. गुड टाइम. हाँ जी. अदरवाइज घर का खाना. ठीक है मैम, थैंक यू बात करने के लिए. थैंक यू सर. Thank you. ओके. बाय बाय. बाय बाय.